फ्रिज रु महिलांकर खंड विखंडित मृतदेह मिलिबा घटना रे एबे आसीछि नुआ मोड़। तेबे घटना रे मुख्य अभियुक्त को चिन्हट करिछि पुलिस। तेबे एने कर्णाटक गृह मंत्री जी परमेश्वर सूचना दैछन्ते। No, police have already collected lot of information, lot of clues, and one individual has also been they say he's the one, but unless we collect more information, we can't really say. He's from West Bengal, they say. We'll say as early as possible, we'll secure. And so there's also information that a person is already in custody and is being interrogated? No. People who are suspects, they bring them to, police, they bring them and inquire them. If it is, if somebody accepts, yes, I am the one who did it, then they will take him to custody. तेबे संदिग्ध जनक पश्चिम बंगर बोली जणा पड़छि। सेप्टेम्बर 21 रे बेंगलुरु रो एक फ्लैट रे थिबा रेफ्रिजरेटर रो 30 खंड कटा शरीर मिलिथिला। परवर्ती समय रे एहा जणे 29 वर्षीय महिला महालक्ष्मीकर बोली जणा पड़ितिला। तेबे किए तांको हत्या करिछि से नै तदंत चलिथिबा बेले कर्णाटक पुलिस पश्चिम बंगर जणे संदिग्ध अशरफ को चिन्हट करछन्ति। I already told that the prime suspect has already been identified. We have to physically arrest him. Only then we will know further details. At this stage, if I tell anything, it will be to the benefit of the accused, not to the public. So I refrain from giving any further details. तेबे खूब शीघ्र तांको धरिबा पई पुलिस चेष्टा चलाइथिबा कर्णाटक गृह मंत्री जी परमेश्वर कहछन्ते। सेबडे एनै पुलिस मध्ये सूचना दैछि कि मुख्य अपराधी को एबे चिन्हट करा जाइछि। तेबे सूचना रहिछि मृत महिला जनक विवाहित किंतु तांको स्वामी ठारू अलगा रहउथिले। से बेंगलुरु रो एक मॉल रे काम करथिले। घटना बाबद रे जानिबा परे तांको स्वामी अपार्टमेंट रे पहुंचिथिले। तेबे तांको किए एवं काहेकि मारला से नै एबे तदंत चलाइछि पुलिस। तदंत परे रहस्य उपरु पर्दा हटिबो। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिदिन टीवी।